नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप जिन शख्स को हमारे साथ खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से आए हुए हैं। और इन शख्स की हम खासियत आपको बताएं तो ये इंग्लैंड से ही अपनी साइकिल से यात्रा करके आए हैं। और जो इनकी साइकिल है, ये विश्व में आपको साइकिल किसी भी साइकिल एजेंसी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साइकिल इन्होंने खुद ही बनाई है। इनकी जो दिलचस्प कहानी है उसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इनकी जो इंग्लैंड से भारत तक की यात्रा है वो कैसी रही और इनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अब ये आगे कहाँ की यात्रा तय करने वाले हैं, अभी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सभी जानकारी विस्तार पूर्वक मिलेगी। इंग्लैंड से चले हुए इनको काफ़ी समय हो गया। 29 जून को ये इंग्लैंड से निकले हुए हैं और यात्रा के दौरान अब ये भारत में यहाँ पर इस समय वाराणसी में सारनाथ, जो जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, वहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर ये कि हमारे जैन सर हैं, उनके यहाँ जो गेस्ट हाउस है उसमें रुके हुए हैं। अभी हम आपको जैन सर से भी मुलाकात कराएंगे और ये जो है अभी पूरा अपना जो विचार है, हम इनसे जो कुछ जानना चाहेंगे वो इंग्लिश में बताएंगे और आपको जैन सर जो है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके अभी बताएंगे। व्हाट इज़ योर नेम? James Elias, वेयर आर यू फ्रॉम? England. आपका यहाँ पर जो भारत में आने का क्या पर्पज़ था? What's your purpose to come to India? It's a pilgrimage to see Buddhist sites in as least harmful manner as possible. आप हिंदी में बताइए इसको क्या इनका आने का मकसद था कि यहाँ पर बुद्धिज़्म के साइट्स देखना था और बुद्धिज़्म का मेन बुद्धगया देखना था और जहाँ जहाँ बुद्ध गए वो देखना था। अच्छा, तो ये यहाँ पर अपने इंग्लैंड से कब जर्नी स्टार्ट की थी इन्होंने? When you have started journey from England? On the 29th of June. इन्होंने 29 जून 2023 में बर्मिंघम से अपनी बाइसिकल से यात्रा शुरू की थी। यात्रा इनकी कैसी रही? He is asking about your means thinking about the experiences about your journey. He wants me to summarize my experiences. Yes, true. He wants to summarize a little bit. In what sense? It is good or not so good? Oh yes. Overall, although there were some problems, by and large, it was very good for the most part. इनकी यात्रा बहुत अच्छी रही, बीच बीच में कहीं कहीं समस्या आती रही, लेकिन ओवरऑल इनकी यात्रा बहुत अच्छी थी। इंडिया में इन्होंने कब प्रवेश किया था? कहाँ कहाँ घूमते हुए आए हैं या डायरेक्ट इंडिया आए हैं? He is asking you started from England and how many countries you have passed and when you entered in India. I travelled through about 15 countries. Some I only went in a little bit, and some I went the entire length of. I arrived in India on I crossed into Amritsar on the 31st of October this year. इन्होंने 15 देशों की यात्रा गए, कहीं कुछ रुके थे, कहीं कम रुके थे और भारत में अमृतसर के पास बाघा सीमा में 31 अक्टूबर 2023 को भारत में प्रवेश किया। ये मतलब इंग्लैंड से साइकिल से ही चले हैं या इन्होंने कहीं किसी सवारी जैसे फ्लाइट वगैरह का भी यूज किया है यहाँ तक आने के लिए? He is asking you come with bicycle and some places you used train or any other things. I cycled as much as I could, but in some places I felt that there was no alternative, or I was asked by the local authorities to use another form of transport. But I cycled as much as I could. So I had to fly because of some
difficulties, and then I was asked by the local authorities to take 2 buses in different places, and apart from that, there were ferries across some rivers where there weren't bridges. But I cycled as much as I could. So I've probably done about 9,000 kilometres. I'm not sure in the minute, but around that amount. ओके इन्होंने मोस्टली 9,000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा की है। बीच बीच में जहाँ कोई डिस्टरबेंस था तो फ्लाइट भी यूज़ किया है, और जहाँ समुद्र पड़ा है वहाँ पर फेरी का भी उपयोग किया है, और लेकिन मोस्टली इन्होंने साइकिल से ही यात्रा की है। इन्होंने भारत में प्रवेश करने के बाद भी मतलब कोई सवारी का जैसे ट्रेन बसेस का यूज़ किया था, या भारत में यात्रा एंट्री करने के बाद सीधे साइकिल से ही उन्होंने पूरा यात्रा करा है? When you entered in the India, you travel by bicycle or you take something else, things, transportation? I've used bicycle to get to all the places that I need to. But just the other day, I used a rickshaw, but it was only for a few kilometres, and I wasn't going to any place at the time. भारत में प्रवेश करने के साथ इन्होंने बाइसिकल का ही प्रयोग किया है। हाँ, लोकल जगह पर जैसे सारनाथ में है तो ऑटो रिक्शा का प्रयोग किया है, लेकिन ये बाइसिकल से ही चल रहे हैं। इनको ये मतलब यहाँ पर साइकिल से पूरे भारत और विश्व की यात्रा करने का कैसे रुझान आया इनके अंदर ये? He is asking about how you can think about to go by bicycle to India. I think there were different people that inspired me, including Satish Kumar, who walked to many countries, including England, as a monk, and there are other people who ride bicycles around the world and so on, and but I wanted to combine that with a spiritual journey, and for me, it's kind of part of the journey is making the effort myself to get there, and that was something that was important to me. And also, I just traveling on a bike is so much different to traveling on other forms of transport. You have a completely different experience. इन्होंने जो प्रेरणा मिली है उसमें सतीश जी हैं, जो एक सर्वोदयी थे, और उन्होंने पैदल ही विश्व की यात्रा की थी और वो इंग्लैंड पहुँचे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग साइकिल से विश्व की यात्रा पर निकले हैं, और उन सब की प्रेरणा से इनके मन में प्रेरणा हुई कि मैं एक बुद्धिस्ट यात्री के रूप में, एक तीर्थ यात्री के रूप में उस जगह जाऊं जहां पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, ज्ञान प्राप्त किया था, उस दिशा से वो आए। दूसरा एक कारण था कि अन्य वाहनों से चलने में हम लोकल लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। साइकिल से चलने में हम कई चीज़ों से मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, उनके आचार विचार से भी संबंधित होते हैं, जानते हैं। दूसरा, बाइसिकल से चलने में पर्यावरण का भी बचाव होता है, प्रदूषण नहीं होता है। ये इनके मेन प्रेरणा के स्रोत थे। इनको जो यहाँ पर यात्रा करने के दौरान कुछ खर्च हुआ होगा, वो कितना खर्च कर लगभग ये पैसा अरेंज करके चले होंगे अपने यहाँ से? How much money you deposit with you to spend on this journey? I don't. Um, I don't know. It was thousands of pounds, but I'm didn't really count. I'm not really. I haven't really focused on the money.
Um, I was waiting for enough countries to be opened up after COVID to um, be able to start my journey, and actually, the amount of money that I had wasn't. I did have some misfortune with money, and so the amount of money that I had wasn't enough. So I asked my friends on social media, and they kindly. So I did a GoFundMe, and they kindly supported me. So more recently, um, I've been um, I've been financially supported by my friends on Facebook and so on. जहाँ तक पैसे की व्यवस्था थी वो एक मुश्किल काम था, क्योंकि इस पूरे ट्रिप में करीब करीब 1000 पाउंड का खर्च था जो कि इनके पास नहीं था। तो इन्होंने कई लोगों को पत्र लिखा, अपनी बातें की, ईमेल भेजा और सोशल मीडिया और फेसबुक का भी सहारा लिया, जिसमें इनके मित्रों ने इनका काफ़ी सपोर्ट किया और आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके द्वारा इनकी यात्रा अभी चल रही है। ये काम क्या करते हैं वैसे? अपना कुछ काम करते होंगे? What's your profession? I'm actually not a professional. I'm not a career focused person. So I've done many jobs. Most of the jobs I've done, many people could do. Most people could do. In more recent years, the closest thing to a professional job I've done is printing, because that's quite a skilled job, and so I'd say that's my profession as close as. इन्होंने बताया कि ऐसा प्रोफेशन मेरा नहीं था और ये छोटे मोटे काम जैसे अन्य लोग करते हैं ये भी करते थे, लेकिन जिस मॉनेस्ट्री में ये सेवा देते थे वहाँ इन्होंने प्रिंटिंग का काम किया और एज ए प्रोफेशनल उन्होंने वहाँ पर काम किया और सीखा। आपके परिवार में कौन कौन है? द मेंबर्स इन द फैमिली, What he wants me to. how many means your parents, your sister, how many means what about the family? My uh, I have parents and I have one sister, and she is married and has 2 children. So I am lucky to be an uncle, and they're 2 lovely boys. इनके परिवार में दो ज़्यादा लोग नहीं हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता हैं और एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं, और ये कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक अब चाचा हो गया हूँ। तो इन्होंने शादी की? हाँ, about your marriage. Yeah, no, I'm not married, and not being married means that I can do other things with my time other than having a family, such as working for charity for a long time or travelling without having to support children and a spouse or a wife. So it's just something that didn't happen for me, but it's never really been important to me. But my sister, she has a family, and so my parents are happy to be grandparents anyway. इनको ऐसा नहीं लगा कि ये शादी करें, क्योंकि उस दिशा में इन्होंने नहीं सोचा और ये दूसरे सेवा के रूप में मॉनेस्ट्री में थे, चैरिटी करते थे, बच्चों को करते थे।
दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि चूँकि मेरी बहन की शादी हो चुकी है और मेरे माता-पिता इसी से खुश हैं कि वे ग्रैंड पेरेंट्स हो चुके हैं। और अभी इनका आगे क्या विचार है इस बारे में ये अभी क्लियर नहीं है, ये सेवा ही देना चाहते हैं। बस शादी नहीं करना चाहते हैं। नहीं। तो अब जो है इनका भारत में ये कहाँ-कहाँ घूम चुके हैं अब तक? He is asking how many places have you seen in India? How many How places? many places you have seen in India? What counts as a place? Places means the Buddhist places. I haven't counted them. इन्हों इन्होंने अभी काउंट नहीं किया है कि भारत में इन्होंने कौन-कौन से शहर या कौन-कौन सी जगह देखी हैं। फिर भी सम So some more modern places, uh, uh, places include places where Tibetans live. Refugees. So places like Dharamsala, where His Holiness the Dalai Lama lives, and Bir, both in Himachal Pradesh. And there's Ruwalsa. Ruwalsa is important in Buddhism, and there's a Sikh guru was there, and some Hindu saints were there also, sadhus or I'm not sure, but and then closer in UP, then Sankissa, where the Buddha descended from Tashita. After Sankissa, Sarasti, where Buddha spent about 24 or 25 years teaching. And after Sravasti, I went to Kushinagar, where Buddha passed away and into Parinirvana. And from Kushinagar, I've come to Sarnath, and I will go to. I should be going to Bodh Gaya and a few places near there also. So quite a few of the places of the Buddha. Yeah. इन्होंने भारत में जब प्रवेश किया तो ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से आए थे। कोई नहीं, वो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। इन्होंने धर्मशाला गए थे, धर्मशाला में जहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूजी सेंटर है और दलाई लामा का भी है आश्रय वहाँ पर, वहाँ गए। और बीर गए थे जो कि वहाँ एक मॉनेस्ट्री है, उसको भी देखा था। और फिर रिवालसा गए थे जहाँ पर तिब्बतियों का भी है और हिंदुओं का भी है, हिंदुओं का भी है। और वहाँ पर देख कर और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में संकीसा है, श्रावस्ती है, यहाँ पर वो देख करके देखते हुए फिर अब सारनाथ आए हैं। कुशीनगर भी गए थे जहाँ भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ था। सारनाथ में आए हुए हैं और यहाँ से वो बोध गया जाएंगे। आगे इनका जाने का कहाँ-कहाँ का मतलब प्लान, कहाँ-कहाँ जाने का प्लान आ गया इनका? नाउ व्हाट्स योर प्लानिंग टू गो अदर प्लेसेस? So yeah, I'll go to Bulgaria, and there'll be some teachings on and some prayers there whilst I'm there, which I hope to attend. And in between them, I hope to go to places like Nalanda and Rajgir, and a few other places like close to Bulgaria in Bihar. सारनाथ के बाद ये बोध गया जाएंगे जहाँ पर दलाई लामा की टीचिंग शुरू होने वाली है, उसको अटेंड करेंगे। उसको अटेंड करने के बाद
बोध गया को पूरा देखेंगे और उसके आसपास के स्थान है, नालंदा है, राजगीर है, उसको भी वो देखेंगे। आपने साइकिल अपने हाथ से तैयार की है, इसमें लगभग कितना खर्च आ गया होगा आपका? हाउ मच यू स्पेंड ऑन योर फिक्सिंग योर बाइसिकल? Um, I don't know. Yeah, I'm sorry. I didn't keep a record, and I didn't add it all up. Approximately. On fixing it, repairing it, The parts and everything. repairing it. Not repairing. The purchasing the parts and you fixing the assembling. Oh, quite a lot. Yeah. Quite a lot means Yes. 100 pound, Oh, 200 pound, more, 500 pound. more. Okay, okay. Yeah. Um, yeah. Yeah. I saved up quite a bit of money, and um, yeah, I spent quite a bit on my bicycle. Um, I wanted to utilise the latest technologies for bicycles to make it efficient, because I was going over long distances, so um, getting more out of whatever energy I put into it makes more of a difference over a really long distance. इन्होंने अपनी जो बाइसिकल खुद ही असेंबल की है, इन्होंने काफ़ी खर्च किया है पार्ट्स ख़रीदने में और पार्ट्स को सर्चिंग में भी काफ़ी खर्च देखा है, फिर उसको ख़रीदा है, फिर अपने से ही बाइसिकल लिया है और अच्छे से अच्छे पार्ट्स को लगाया है, क्योंकि ये जानते थे कि मुझे बहुत दूर जाना है और बाइसिकल ऐसी होनी चाहिए कि वो बीच में ख़राब ना हो। और जहाँ तक खर्च का अनुमान है, ये अभी क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोर देन 500 पाउंड्स उन्होंने खर्च इस पर किए हैं, ऐसा उनका मानना है। इनको यहाँ पर भारत की यात्रा के दौरान कैसा महसूस हुआ है? हाउ यू फील इन इंडिया? योर फीलिंग इन इंडिया? My feeling. That's a very vague question. How do I feel in India? Uh, over, um, India is a very rich and varied place, and I enjoy the people very much. Essentially, I feel India is very good, essentially, but like everywhere else, there's some problems. So nowhere's perfect. But yeah, it's difficult to generalize. इनका मानना है कि भारत का जो अनुभव है अभी तक का घूमने का, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। खट्टे मीठे अनुभव होते ही रहते हैं, तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, उसको अभी मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ और अभी मेरी यात्रा चल ही रही है, इसलिए वो अभी पूरी तरह से मैं इसको नहीं बता सकता हूँ। ओवरऑल कहीं कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है, तो इसलिए अच्छा भी है और थोड़ा अच्छा नहीं भी है। भारत में What you have seen in Sarnath? What have I seen in Sarnath? हाँ, The main stupa where Buddha first taught, the stupa where he met his 5 disciples. There's some seats of learning, Tibetan seats of learning, which we visited, the Central Institute of Tibetan Studies and the Sarnath International Nyingma Institute, and there are also many other temples, international ones from various Buddhist countries that I've visited also. सारनाथ में And of course, I forgot
the first night I got here. Kagyupa. Yeah, the Vajravidya. Vajravidya Institute also. Yeah. सारनाथ में जैसा ये 18 तारीख को शाम को आए थे, इन्होंने शाम को ही कैंपो वज्रविद्या के मुलाकात की कैंपो से, और उन्होंने इनका स्वागत किया और इन्होंने पूरी मोनेस्ट्री दिखाई जो कि सारनाथ के खजुही में बना हुआ है। दूसरे दिन ये तिब्बती इंस्टीट्यूट गए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ ऑफ द तिब्बतन। वो वहाँ की लाइब्रेरी देखी और काफ़ी अच्छे से उसको अध्ययन किया। उसके बाद सारनाथ इंटरनेशनल निंगमापा इंस्टीट्यूट गए थे जो शक्तिपीठ पर बना हुआ है, और आज उन्होंने धमेक स्तूप पर गए थे जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, उस पर उन्होंने ध्यान लगाया, देखा। इसके अलावा म्यूज़ियम भी गए, थाई मोनेस्ट्री, कंबोडिया, जापानी मंदिर, चाइनीज़ मंदिर भी देखा।